ऑडियो और वीडियो सारे लोग क्लियर है? जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी से एक बार पहले बता दें कि आवाज़ आ रही है या नहीं। ऑडियो और वीडियो, वॉइस एंड विजुअल्स सारे लोग को क्लियर है या नहीं? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेक्शन। मैंने आप सबसे पिछले सेशन में जैसे वादा किया हुआ था कि हम लोग को जो नेक्स्ट क्लास लेनी है उसमें ये समझेंगे कि वास्तव में ये जो इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है, जिसको हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की हुई थी। इसकी वजह से, इस इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से हमारे अर्थ के सरफेस पे कौन कौन से चेंजेस होते हैं, इन सारी चीजों को हमें समझना है अब आगे के सेशन से। क्योंकि यूनिवर्स की ओरिजिन से लेके अर्थ की फॉर्मेशन, अर्थ के स्ट्रक्चर को हम लोग कंप्लीटली समझ चुके हैं। अब जो फॉर्मेशन हमारी स्टार्ट होती है, जो नेक्स्ट सेशंस हमारे होने वाले हैं, उनमें हम लोग समझेंगे कि हमारी जो अर्थ की सरफेस है, ये एक बार बनने के बाद इसका बनना, इसका फॉर्मेशन रुक नहीं गया। इट अंडरगोज कंटिन्यूअस चेंजेस, इट इवॉल्व्स एंड देन destroys continuously one after one. These processes are continuously ongoing. तो ये सारी चीजें जो है, ये क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, इन सब चीजों को हमें समझना है अपने आगे के सेशंस में। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया हुआ था कि मेंटल सेक्शन जो है, स्टेनोस्फीयर सेक्शन जो है, ये लिक्विड पोर्शन में है, प्लास्टिक फ्लूइड पोर्शन में है, और इसके ऊपर सॉलिड क्रस्ट हमारी जो है वो फ्लोट करती है। तो जो सॉलिड क्रस्ट वाला सेक्शन है, वो एक प्रेशर बनाता है हमारे मेंटल के ऊपर। जो मेंटल वाली बीच वाली पोर्शन है, जिसको हम लोग सीमा भी कहते हैं, इसके ऊपर एक इनकम्बेंट लोड जो है वो क्रस्ट का रहता है। इसी से रिगार्डिंग एक कॉन्सेप्ट आगे ज्योग्राफी में निकल के आता है, जिससे हम लोग कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स या टेक्टोनिक मूवमेंट, जिसके बारे में आज हमारा ये सेशन है। और आज के इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि वास्तव में टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक है क्या। अगर हम प्लेट टेक्टोनिक्स को स्पेसिफिकली बात करें, थोड़ा सा एक डायग्राम की मदद से समझते हैं पहले। अगर मान लिया जाए कि ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ का क्रस्ट पोर्शन है। कौन सा वाला पोर्शन है? ये क्रस्ट वाला पोर्शन। इसके ठीक नीचे वाला जो सेक्शन है, जिसको हम लोग मेंटल कहते हैं, ये रहा मेंटल सेक्शन। ठीक है, ये सेक्शन कौन सा है? मेंटल। और ये सेक्शन है कोर। मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया हुआ था कि क्रस्ट का जो लोअर पार्ट है और मेंटल का जो अपर पार्ट है, अगर हम इन दोनों को कंबाइनली किसी एक नाम से जानते हैं तो वो एस्थेनोस्फीयर है। These both parts are combinedly known as asthenosphere section. And the characteristic of the asthenosphere is it is plastic fluid in state, physical state I am talking. So physical state इसकी जो है वो plastic fluid है। What does this imply? It implies though it can move but very slowly. इसमें मोशन हो सकता है, ये एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करके जा सकते हैं, लेकिन बहुत धीमे। इसकी जो स्पीड है वो कम रहने वाली है, बिकॉज इट हैज सर्टेन प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी आल्सो अलोंग विथ फ्लूइडिटी। तो ये जो सेक्शन है, जिसको हम लोग मेंटल के नाम से जानते हैं, ये फ्लूइड के साथ साथ रिजिड भी है। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज प्लास्टिक फ्लूइड। प्लास्टिक फ्लूइड, और ये पूरा ऐसा ही है। यहाँ से अगर आप देखें यहाँ तक, तो ये जो सेक्शन है, इतना सेक्शन, ये सेम उसी पैटर्न पे बना हुआ है, जिसको हम लोग प्लास्टिक फ्लूइड कहते हैं। इसके ऊपर की ये जो क्रस्ट सेक्शन है, ये क्रस्ट सेक्शन ये रिजिड है। और क्रस्ट को भी हमने दो पार्ट्स में बांट के देखा हुआ है। कौन कौन से वो दो पार्ट्स थे? ओशनिक
और कॉन्टिनेंटल। तो जाहिर सी बात है कि जैसे अगर हम इसको ओशियनिक क्रस्ट कहें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को कुछ नीचे होना, सॉरी, अगर इसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहें, दिस इज अवर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, लेट मी चेंज द कलर, दिस इज अवर कॉन्टिनेंटल वन एंड दिस इज ओशियनिक वन, this section is oceanic. So definitely this section must be at greater depth and this section must be at lower depth, or it must be at the surface, we can say. So this section lies at surface and this section is lower or deeper. ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है जिसको हम लोग क्रस्ट के ऊपर वाला पोर्शन कहते हैं, इसको क्रस्ट कहा जाता है और दिस इज कंबाइनेडली नोन एज लिथोस्फीयर. Lithospheres generally imply lithos meaning rock plus sphere because it is spherical in shape and composed of rock-like minerals. That is why it is known as lithosphere. ये जो सेक्शन है इसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं और रॉक स्फीयर. तो ये जो रॉक स्फीयर वाला हमारा सेक्शन है ये कंटिन्यूअस नहीं. इस बात से क्या मतलब है कि ये कंटिन्यूअस नहीं? इसके कंटिन्यूअस होने से ना होने से ये मतलब है कि ये प्लेट्स में फ्रेगमेंटेज में डिवाइडेड थोड़ा थोड़ा, मतलब कुछ सेक्शन इधर है फिर दूसरा सेक्शन इधर है फिर दूसरा सेक्शन इधर है, तो these are fragmented and these fragmented parts are really floating upon this fluid section of mantle known as asthenosphere. So this is certain prerequisite that we must understand in order to understand the tectonic movement process. Now let's deal with it. First of all, the concept emerges number one here. What is a tectonic plate? What is a tectonic plate? Tectonic or lithospheric plate is a massive, irregularly slab of solid rock. Massive, number one, irregular shape and slab of solid rock. So this section, irregular shape, massive and solid rock. This section is known as tectonic plate. The lithosphere क्या है? The lithosphere includes the crust and upper mantle. जो crust वाला section है और upper mantle वाला section है. I think there must be a, yes, this is. This section is crust. This section is crust, below which the section lies called asthenosphere. So this crust section along with certain parts of mantle is known as lithosphere. Lithosphere, what does it mean? Rock sphere, that means it is solid which is generally floating upon this liquid section. 5 to 100 kilometer in oceanic regions and up to 200 kilometer in continental regions, and we have earlier studied about it that the continents are massive, their height is significantly more than the oceanic part because they are composed of lighter material. So there must be a balance. So in order to maintain that balance or in order to strike that balance, they are relatively wider when we compare their depth. So this continent section is generally wider and composed of relatively lighter rocks, while the oceanic section is less wider or has less depth than this section, but at the same time it has more denser material. So the balance is struck because ultimately what is going to impact at the bottom is the overlying weight, and this overlying weight comes from the density of the rocks and their mass. So the mass of the continental section is more than the oceanic section, but the density is less. So this balance is struck thus. This concept of tectonic plates was introduced in 1967. 1967. First of all, we must understand what the tectonic plate is.
So a tectonic plate is a massive irregularly shaped slab of solid rock. ये सॉलिड रॉक का बना हुआ होता है, मासिव होता है, काफी साइज में बड़ा होता है और इरेगुलर शेप का होता है. दिस मींस इट डज नॉट फॉलो एनी काइंड ऑफ शेप. इसी को हम लोग कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट. ये दो टाइप की होती है टेक्टोनिक प्लेट. These are of two types. Number one, oceanic, and number two, continental. And these are divided on the basis of major section of this plate is found at which region. If the major section of any plate is surrounded by continent, then definitely it is going to be called as continental. But if the on the contrary, the major section or the major portion of the plate is covered by oceans, so it is called as oceanic plates. So the tectonic plate is divided into two categories, continental and oceanic. These plates are classified as continental or oceanic based on which type of lithosphere occupies the larger portion. किस टाइप का ये जो प्लेट्स हैं जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, these plates are not stationary. These plates are not stationary. What does this imply? This means they are not stable at a place, though they appears to be largely stable because the rate at which they move is much slower than we grow up. So that's why we perceive them as stable, but they are not stable in absolute manner. They are not stationary, which means it does not continuously remain at a particular place or a complete period of time or absolute period of time. But what kind of motion they do? So they move from one place to another. Move from they move from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह पर ये प्लेट्स कंटिन्यूअसली मूव होती रहती हैं, जाती रहती हैं. और ये क्यों होता है तो हमें समझना है इसको. This motion, why does this motion really occur? Let's understand about this. When I have told in my previous lecture to you that the mantle section or the upper mantle section to be specific is in plastic fluid condition, which necessarily means it has certain conditions of fluids. So there is a specific type of motion or a specific type of mechanism in the fluid that occurs when it comes to the heat transfer mechanism. जब भी कभी हम हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, अब हीट ट्रांसफर यहाँ पे कहाँ से आ गया? हीट. तो सबसे पहले हमें एक चीज को समझ लेनी चाहिए कि वहां पे सोर्सेज ऑफ हीट है. कौन कौन से सोर्सेज हैं? तो मैंने बता दिया था उस चीज के बारे में आपको उसी दिन कि रेडियो एक्टिव डिके नंबर 1, continuous emission of energy due to decay of radioactive minerals. Number 2, depth. Why? DEPTH 32 degrees Celsius per kilometer losses. So these are two significant sources. Those provide significant amount of heat energy at that level, at the level of the upper mantle section or the asthenosphere section. So this, suppose this section is asthenosphere section, okay? This has this section, the upper section or the upper plate is, this is less or this has less depth, while this section has higher or greater depth. By going this logic that every 1000 meter, if we deep down or if we go down in our Earth's crust, definitely we are going to see an increasement of 32 degrees Celsius in the temperature.
Suppose there is variation of 200 kilometer. In order to obtain the temperature variation between this upper portion and this lower portion, we must calculate this 200 multiplied by 32, so 6400 degrees Celsius. The variation of 6400 degrees Celsius approx is found between this and this region. So definitely here the temperature is higher. In this region, higher temperature, and this region express less heat. And this section is filled up with with something called plastic fluid metal. This is plastic fluid, okay? This section is plastic fluid, which means it also has certain properties of fluid. One significant property of fluid is that, number one, convection. Convection is really heat transfer mechanism. What is this happening? Heat transfer mechanism in liquids. When there is temperature variation in liquids, they transfer heat from one place to another in order to maintain an equilibrium in temperature at all places. In order to achieve this equilibrium, what does this mental section do? Because there is higher temperature at this place and lower temperature at this place. The tendency of the temperature is, or the tendency of heat transfer is higher to lower, higher to lower. So this more, or what we can say, this section or this material which has higher amount of temperature will tend to rise above. Why? Because this section has less heat or less temperature, and when this will happen, the portion that was here, this will settle down, and when this will settle down, this will also repeat the same process. So such kind of cycles are generated. These cycles are in geography as known as mental convection. This mental convection is the primary factor which derives the tectonic plate movement of. Suppose if this material is continuously rising, this is going to impact this portion of the plates. A divide-like manner. In divide-like manner, this will try to force these two plates to be separate. यहाँ से ये दोनों प्लेट्स को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, और जब ये प्लेट्स सेपरेट होंगी तो इनके बीच का गैप, ये मैग्मा से रुक जाएगा बीच में कहीं ना कहीं, क्योंकि दिस मैग्मा इज कंटीन्यूअसली अपवेलिंग और राइजिंग और ट्राइंग टू राइज एट द वेरी एट द क्रस्ट. जब ये दोनों के बीच का गैप कंटीन्यूअसली ऐसे बढ़ जाता है तो क्या होता है कि these plates continue to move from or apart from each other. जब ये एक दूसरे से दूर जाने लगती है तो this type of movement is known as tectonic movement or the plate movement. I think I have tried to make you understand better, and it's enough. So these plates when move with respect to one another, or in regard to this type of movement is known as plate tectonics or tectonic movements. Now we are proceeding to the next. I have already told you massive fragmented
many massive and fragmented plates are really floating on the surface. The name of some major plates are: number one, Antarctic plate, this one, North American plate, this one, South American plate, this one, Pacific plate, this one, Australia New Zealand plate, this one, African plate, this one, and Eurasian plate, this one. So these are the 7 major plates. There are some minor plates also, but these are 7 major plates. Those are found on our Earth's crust. The primary force is the slow movement of hot, softened metal, which is known as convection. Heated material rises, spreads and cools, and sinks in a circular manner. जो मटेरियल नीचे हीट हो जाता है, तो मटेरियल नीचे हीट हो जाता है तो ऊपर उठता है, इट विल अपवेल, when it will upwell, it will undergo a change in the temperature और नेगेटिव चेंज इन द टेम्परेचर, बिकॉज ऊपर तो टेम्परेचर है नहीं, इतना हीट है नहीं, तो वहां पर जाके इसका जो टेम्परेचर है वो गिरेगा. जब ये टेम्परेचर गिरता है तो वापस से ठंडा हो गया, जब ऊपर वाला सेक्शन ठंडा हो गया तो फिर वो नीचे बैठेगा. तो दिस साइकिल कंटिन्यूअसली कंटिन्यू continuously occurs. Plates are not fixed, they move horizontally over the atmosphere, a hotter fluid zone of the 900 to 700 kilometers. This I have already told you. Now, what comes here? When we talk about these plates and they move with respect to each other in 3 manners. There are 3 types of movements which occur when the plates interact with each other. In the plate tectonics, 3 types of movement occur. On the basis of these movements, the boundaries of those plates are known as various names, known by various names. What are these names? Number 1, convergent boundaries. What is convergent boundary? Convergent means destructive boundary. Convergent boundary means when this plate is here, this plate is here, this is moving in this direction, this is moving in this direction. This type of movement is known as convergence. And these boundaries are, when these two will meet, they will create a boundary called convergent plate boundary, which is also known as destructive. Why? Because they will override each other and destroy the landforms which are found in the boundary region. That's why these are known as destructive boundary. And the second logic behind their name of destructive is that in order to understand the name of destructive, you must understand this. Why? Because this plate is moving in this direction and this plate is moving in this direction, or this is stable, suppose. But when this plate is coming here, so the less denser plate is going to be up and the denser plate is going to be subduct. So when this subduct, it faces high temperature prevailing there and it will continue to melt, or it will start to melt. When this plate will start to melt, no concept of plate, then it is going to be combined in the mental section. जब ये mental section में जाके combine हो जाएगी तो ये plate फिर बचेगी कहाँ पे? So this is why this is known as destructive boundary. Why? Because the plate is going to be destructed here. While on the contrary, this section here, the plates are moving apart from each other. When the plates are moving apart from each other, this type of boundary is known as divergent boundary or the constructive boundary. Why? Why constructive? Because here the gap between these two boundaries is going to be filled with lava. The gap between those two boundaries is going to be filled with lava. इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो गैप हमारा है, उस गैप को लावा से भर दिया जाएगा, और जब वो लावा उस जगह पे भर जाएगा तो देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू क्रस्ट,
एक नई क्रस्ट वहां पे बन जाएगी which will be extra crust because it was not earlier at that place. उस जगह पे वो प्लेट वो क्रस्ट थी तो नहीं, ये लावा या मैग्मा जैसे ही ठंडा होगा वो क्रस्ट बनाएगा वहां पे जाके ठंडा होने के बाद, लेकिन ये क्रस्ट यहाँ पे पहले से नहीं थी. This is newly originated. This is why this section is known as divergent and constructive because the plate is being constructed here, the crust is being constructed here. Why divergent? Because the plates are diverging from each other, moving apart from each other. There are many minor plates, almost 20. More than 20 also exist according to some geographer, Pallavi. Naming all those plates is not worth time, neither it is asked in an examination. And the third type of plate boundary is transform boundary. This is unique in nature. Why? Let us understand this. Transform boundary is conservative boundary. Look here. This is one section of plate. Another section is this. They are neither converging toward each other nor they are diverging from each other, which means neither they are coming towards each other, neither they are nor they are moving apart from each other. Rather, they are undergoing a distinct type of movement. They are sliding past each other. They are sliding past. This is going to be here and this is going to be here. Just slide past each other. They stick with each other, but due to certain forces, they begin to move with in relation with each other, neither creating anything nor destroying. But due to this sudden movement, energy releases, and this energy travels across the surface about which we have studied in our, I think, the previous to previous session, earthquake. This travel of energy across the surface of the earth causing huge amount of destruction of surface materials or regarding the buildings etc poles. So this type of energy release is known as earthquake. I think we have another name also. Try to recall what is the another name for this activity. Anyone? Another name for this activity is seismic activity. To transform plate boundaries or conservative plate boundaries responsible for earthquakes. This section is convergent plate boundaries or destructive plate boundaries. As we can see here, this mantle section, this oceanic crust is going to be subducted under this continental crust because continental crust is less dense in nature. So the less dense material is going to be float and the denser material is going to be subduct. It is going to be sink. So this denser plate, when sink upon this, it merges with the plastic fluid section of mantle. And due to high prevalence of the temperature or prevalence of the high temperature at that mantle, this plate melts. And when this plate melts, there is no concept of plate then. So plate is being destructed really. That's why this type of boundary is known as destructive boundary and convergent boundary, because the movement which these two plates are doing or undergoing, these are known as convergence. And this is divergent plate boundary. Look here. This rise of magma is drifting apart these two places with respect to each other. ये मैग्मा की राइज की वजह से ये दो प्लेट्स जो हैं ये एक दूसरे से दूर जा रही है. जब ये प्लेट्स दूर जाती है तो इनके बीच वाला ये जो सेक्शन है, दिस सेक्शन इज गोइंग टू बी फिल्ड अप विथ मैग्मा एंड न्यू क्रस्ट इज गोइंग टू बी. That is why these type of plate boundaries are known as divergent plate boundaries, and the another name is constructive plate boundaries because they are really constructing new plates at there.
So these were three types of plate boundaries. Where they are found, let's have a look. Oceanic, continental, they may be oceanic and continental, which means there must be an oceanic plates interacting with a continental plate. And the second one is oceanic to oceanic, two oceanic plates interacting with each other, continental and continental, two continental plates interacting with each other. There are certain examples also, Washington and Oregon coast, Mariana Trench, Mariana and Himalaya. And the second type of boundary is divergent boundary, which is known as constructive boundary. Seafloor spreading is the concept that occurs here. Seafloor spreading, which means most these type of boundaries are found between the sea, and new crust is being formed. New crust is being formed here. So this is resulting into a new phenomenon. Actually, what is happening here? This floor of the bottom or this bottom of the sea is really spreading. That's why the name arises, sea floor spreading. About this concept, we will talk in the later classes because this is a separate concept of geomorphology. So let's understand this way, that sea floor spreading is really spreading of the floor of the bottom or the sea, of the bottom of the sea. By which process is there? So the process is there is continuous swelling of the magma, which is causing diverging movement, and this divergent movement is causing formation of new crust, and this new crust increasing the area of the seafloor bottom. That's why the concept seafloor is spreading. While coming to the transform boundaries, here friction causes plates to stick, building stresses that triggers earthquakes. इसकी वजह से earthquakes mainly इस जगह पर जो large earthquakes आते हैं वो इसी की वजह से आते हैं, but sometimes earthquakes also occur in all types of boundaries. Why? Because whenever there is going to be fracture, definitely the releasing energy will cause earthquake. यहाँ पे भी फ्रैक्चर होगा एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. जब यहाँ पे फ्रैक्चर होगा तो यहाँ पे भी, और सबसे इंटरेस्टिंग फेनोमेनन यहाँ पे ये है कि हियर वोल्केनिक eruptions continuously occur and every volcanic eruption is associated with the earthquake. The intensity may vary, but definitely there is going to be. Now the next concept and the last concept of today's class, subduction. What is this? So we have talked about it, but let's understand this again. Subduction zone. Subduction is the process and subduction zone is the reason. Subduction zone. Subduction zone is the region where the denser plates is really being sinked down with respect to the lighter continental plate. एक ऐसी जगह जहां पर जो भारी वाली प्लेट है जिसको हम लोग डेंसर प्लेट कहते हैं, ओशनिक प्लेट, अगर हम थोड़ा स्पेसिफिक होकर बात करें, तो जब ये ओशनिक प्लेट्स किसी कॉन्टिनेंटल या हल्की प्लेट्स के साथ इंटरेक्ट करती है, तो इस इंटरेक्शन की वजह से जो भारी वाला पोर्शन है वो नीचे सिंक कर जाता है मेंटल में. इस जोन को जहां पे ये सिंक करता है, दिस रीजन इज नोन एज सबडक्शन जोन. द प्रोसेस इज नोन एज सबडक्शन. Subduction occurs when one plate is forced beneath another. जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के रिस्पेक्ट में नीचे जाती है, नीचे सिंक करती है, इस प्रोसेस को सबडक्शन कहते हैं. ठीक है, और ये होता कब है, तो इसमें इस चीज का थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, बिकॉज ओशनिक प्लेट इज डेंस. Oceanic plates, why dense? Sima material having the density of 3.0 gram per centimeter cube, while the continental plates are lighter because having density of 2.7 gram per centimeter cube. तो जो भारी वाली प्लेट है वही नीचे बैठेगी. तो जो भारी वाली प्लेट है जब वो सिंक करती है तो
जनरली केवल ये दिखा जाता है कि ओशियनिक प्लेट भी नीचे बैठेगी जब ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच इंटरेक्शन होगी। जब ओशियनिक और ओशियनिक प्लेट के बीच होगा तो भी वहां पर उनकी रिलेटिव डेंसिटीज देखी जाएगी। ठीक है, या वो किस पोजीशन में है इस चीज से भी, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मान के चलो एक प्लेट ये है हैविंग और एक प्लेट ये है, इनकी दोनों की डेंसिटी सेम है, so this shape or this position will cause to sink down this type of plate। तो पोजीशन की वजह से और डेंसिटी की वजह से यहाँ पे सिंक करती हैं जो भारी प्लेट्स होती हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सबडक्शन जोन। देयर आर लैंडफॉर्म्स एसोसिएटेड विद ईच टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। हर एक टाइप की प्लेट बाउंड्रीज के साथ कुछ लैंडफॉर्म्स एसोसिएटेड हैं, वहां पर बनते हैं, जिनके बारे में हम एक अगली और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कौन सी जगह पर कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्लासेस जो हमारी, जिसमें हम लोग अल्फ्रेड ब्रेजनर, उनकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसके साथ साथ हैरी हेस का सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ा सा सिर्फ चर्चा की हुई है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि वास्तव में सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्यों होता है, इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया, कब दिया, क्यों दिया, और उसकी जो ड्रॉबैक्स हैं वो क्या है। इसके साथ साथ सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड ब्रेजनर, कि क्यों कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की जरूरत पड़ी, क्यों इन सारी चीजों की जरूरत पड़ी। आपने एक नाम भी सुना होगा कि पेंजिया महाद्वीप पहले, और एक बहुत बड़ा ओशियन था विच वाज द मेजर ओशियन ऑफ द टाइम, पेंजिया, व्हाई दिस पेंजिया ब्रोक आउट। इन सारी चीजों के बारे में अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग समझने वाले हैं। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर सम अप करते हैं और एक बार रिकॉल करते हैं कि हमने पढ़ा क्या वास्तव में। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है, व्हाट आर द प्लेट्स, नंबर 1, व्हाट इज द ड्राइवर बिहाइंड दिस प्लेट टेक्टोनिक और बिहाइंड दिस प्लेट मूवमेंट, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि मेंटल कन्वेक्शन, रीजन क्या है उसका, हीट, और हीट कहां से आती है, तो रेडियो एक्टिव डिके एंड डेप्थ सेक्शन, डेप्थ लॉजिक 32 डिग्री सेल्सियस पर क्यूबिक, एंड दिस ड्राइव्स कन्वेक्शन, एंड कन्वेक्शन रिजल्ट्स इनटू द मूवमेंट प्लेट्स। इतना रिकॉल कर पा रहे हैं? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर गेटिंग मी। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम डेफिनेटली कमेंट सेक्शन इज ओपन टू यू ऑल। Tectonic movements and types of plate boundaries. We have also studied various types of plate boundaries, कितने टाइप की प्लेट बाउंड्रीज हमारी होती हैं, और उन प्लेट बाउंड्रीज की कौन कौन से एसोसिएटेड फीचर्स हैं, क्यों स्पेसिफिक नाम उसको वो दिया गया, इन सारी चीजों के बारे में भी हमने बात की। और एक और कॉन्सेप्ट जाना, इसको हम लोगों ने सबडक्शन जोन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और उम्मीद मेरी ये है कि जो भी मैंने चीजें आपको बताई हैं ये आप सारे लोगों को समझ में आई, किसी भी प्रकार की कोई भी कॉन्सेप्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग ना हुई। अगर हुई है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन टू यू ऑल, आई विल ट्राई टू respond to your comments within the minimum amount of time possible. I think there are guys who are commenting. Sorry for that all. I was not able to read your comments. ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। विदा लेते हैं आज के लिए आप सबसे। धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।